case of excitation table for the JK flip-flop, your inputs will be now. कैसे किया था लास्ट टाइम में? देखो क्या किया हम लोगों ने, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. What should I write now? Here. Truth table. Initially, I need to write as Q1 and Q1 plus 1. J and K. Exactly. So I will write J, K. For J and K, I need to write what will be the outputs. Right. So this is our previous state, and this will be next state. Right. So possible combinations for J and K. 0, 0. For 0, 0, Qn. It could be either 0 or 1. Right? So previous state कुछ भी हो सकता है ना. It could be either 0 or 1. What is the next state? J and K is equal to 0, 0. Qn is 0. Then what is the next? 0. Very good. 0, 0. Previous is 1. What will be the next? Very good. For 0, 1, again we have previous bit could be either 0 or 1. For 0, 1 condition now, 0, 1 is input from the JK. Previous bit is 0. What will be next? Why? K is equal to 1. Reset. Very good. So this will be 0. Input is 0, 1. Previous bit is 1. What will be next? 0. Because flip-flop is going to reset, right? So clock pulse is there, ना? Clock pulse हमेशा रहेगा. Next is 1, 0. For 1, 0, previous bits could be either 0 or 1. 1, 0 is input for JK flip-flop. Previous bit is 0. What will be next? Why? Set. Exactly. JK flip-flop is going to set. Now 1, 0 is input. Previous bit is 1. What will be next? 1. Very good. Right. Now again same. Fourth condition will be 1, 1. Bits will be again 0 and 1, which is stored in the flip-flop. Here. Now input is 1, 1. Previous bit is 0. What will be next? Toggle मतलब क्या? Next. Suddenly next. 1. Exactly. That is 1. पहले 0 है, जैसे क्लॉक मिला, नेक्स्ट क्या मिलेगा? 1. उसके नेक्स्ट क्लॉक पे 0, उसके नेक्स्ट क्लॉक पे 1. ऐसे वो 1 0 1 0 करता जाएगा. राइट. नाउ इनपुट इज 1, 1. प्रीवियस बिट इज 1. नेक्स्ट क्या आएगा क्लॉक मिलने के बाद? 0. क्लियर है? इतना क्लियर हो गया. अब मुझे क्या करना है? आई नीड टू फाइंड द एक्साइटेशन टेबल. तो एक्साइटेशन टेबल में क्या बोला था हम लोगों ने? व्हाट टू राइट? Qn plus 1. राइट. अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? J and K. हाँ, मुझे डाउट है. J and K फाइंड आउट करना है. So Qn and Qn plus 1 will be 0, 0. Just find out Qn and Qn plus 1 as 0, 0. इधर देखो 0, 0 का कंडीशन. First condition, और टेल भी 0, 0. तो मैंने दोनों को 1, 1 लिखा है. तो दोनों को लेना है ना मुझे इसके लिए बात. राइट. तो Qn is equal to 0, Qn plus 1 is equal to 0. ये वाला दो कंडीशंस है. और the same two conditions find out what is J and K. What is J and K? First is 0, 0. इसके लिए क्या है? 0 and 1. 0 and 1. तो क्या बोला था मैंने? 0 है, तो इसका कॉमन हम लोग क्या लिखते हैं? 0. 0 to 1 है मतलब don't get. Right? So similarly here you can enter 0x. Clear हो गया? Similarly find out another condition is 0, 1. Find out where the 0, 1 is. This must be 2. For Qn, this will be, इसको रब कर रहा हूँ मैं. 0, 1.
What is JK? 1 0 and 1 1. ठीक है, चेक करो है, चेक करो, check it out, right? So how I can write for this? 1x. So this will be 1x. Please find out the remaining conditions. So this will be your 3 3 4 4. Your excitation table will be 1 0. Please verify. Please verify. आ गया सबका? Verified, verified. कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं.